हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश द स्विंग का लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ। इसमें पहला कॉलम है डेट का, उसके बाद क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 40 मिनट्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें लर्निंग आउटकम्स, द चिल्ड्रंस आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम। सेकेंड है टॉपिक द स्विंग। थर्ड है रिक्वायर्ड मटेरियल, इसमें टेक्स्ट बुक, पिक्चर, यूजिंग मटेरियल अवेलेबल ऑन दीक्षा, ICT का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फोर्थ है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें पहला है सीरियल नंबर, स्टेप्स, एक्सपेक्टेड टाइम, मेथड्स ऑफ असेसमेंट। ए है इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग 5 मिनट, क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ करेंगे, डिस्कशन होगा। आई विल इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन एंड आस्क सम क्वेश्चंस। व्हाट डू यू लाइक टू प्ले इन द गार्डन? चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बाद बच्चों से पूछेंगे हैव यू एवर सीन अ स्विंग? चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बाद टीचर फिर पूछेंगे व्हाट डू यू सी फ्रॉम अबव व्हाइल स्विंगिंग? चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन आई विल स्टार्ट द पोएम। बी है मिड ऑफ द पीरियड, 20 to 25 मिनट यूज़ करेंगे। ऑब्जर्वेशन होगा, डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन होगा इसमें मेथड ऑफ असेसमेंट में। I will recite the poem The Swing, which is written by Robert Louis Stevenson with proper rhythm and action. I will explain the poem line by line in Hindi to maintain interest and understanding of the poem. While teaching, I will ask questions from the students. Now I will ask students to sit in the groups and ask them to recite the poem aloud. While the students are reciting the poem individually, I will go around the class and observe how well students are reciting the poem. I will motivate the students who are not able to recite correctly. While teaching, I will write the following lines of the poem in English on board. How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. C है end of the teaching 5 मिनट, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करेंगे। I will ask the student to copy the board work in their notebook. This way I will consolidate today's class. इसके बाद है homework. I will give some questions on the basis of the lesson. इस पर भी 5 मिनट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देंगे होमवर्क के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस। आई विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन द पोएम नेक्स्ट डे एंड कवर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम इट। आई विल मेक अ लेसन प्लान बाय ऑब्जर्विंग द डिफिकल्टीज विच आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ टीचिंग। ये हमारे फर्स्ट डे का लेसन प्लान था। आइए देखते हैं हमारे सेकेंड डे का लेसन प्लान। यहाँ पे फर्स्ट है सीरियल नंबर, स्टेप्स, एक्सपेक्टेड टाइम, मेथड्स ऑफ असेसमेंट। पॉइंट ए है हमारा इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग 5 मिनट, ऑब्जर्वेशन मेथड होगा, क्वेश्चनिंग मेथड एंड डिस्कशन होगा इसमें। आई विल स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस डे रीडिंग एंड चेक द होमवर्क गिवन ऑन द लास्ट डे। लेटर आई विल चेक इट आल्सो। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे इसका रिप्लाई देंगे। आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन आई विल आस्क द स्टूडेंट लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम द स्विंग। बी है मिड ऑफ द पीरियड 20 to 25 मिनट, डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन यूज होगा मेथड ऑफ असेसमेंट में। आई विल रिसाइट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम अलाउड एंड एक्सप्लेन इट इन हिंदी। आई विल शो द मटेरियल अवेलेबल ऑन दीक्षा टू द स्टूडेंट। नाउ आई विल डिवाइड द स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप्स एज पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स available. Each group will read the poem. Then I will ask each group to recite 4 lines of the poem. C है end of the teaching 5 minutes, observation method यूज़ करेंगे। I will write the word meaning of the poem and ask them to copy it in their notebook. This way I will consolidate today's class. इसके बाद यहाँ पे होमवर्क देंगे। I will give some questions. यहाँ पे क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। इसके बाद है लास्ट नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस। I will continue to work on the poem next day and cover all questions and answer from it. I will make lesson plan by observing the difficulties which are faced at the time of teaching. इस तरह से ये आज का हमारा लेसन प्लान था। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा।
अगर आपको इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।